أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala sebelum mereka menjadi seorang dai. Bagaimana kehidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka ini menjadi seorang dai, maka kita perhatikan juga bagaimana kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala, yaitu dengan sebab ada satu orang dai sehingga bisa mewarnai kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Sebelumnya kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala begitu hancur, begitu rusak, tetapi ketika mereka menjadi seorang dai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita putuskan diri kita ini adalah sebagai seorang dai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kehidupan kita. Bapak-bapak telah merasakan bagaimana kehidupan saya sebelum saya kenal usaha dakwah ini, dan bagaimana kehidupan saya setelah saya ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melewati Rasulullah SAW, itu dengan firman Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, yaitu ini adalah jalanku, usaha dakwah ini adalah jalanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan basirah, dengan ketaatan, dengan keyakinan, kemudian dengan basirah yang ada di dalam hati. सहाबा में जो भी ईमान लाते थे वो ये समझ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तन्फ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह का बेहद करम और एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको इस अज़ीम मजमे में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम सब आए नहीं हैं बल्कि अल्लाह ने बुलाया है हम सबको यहाँ। अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ से अल्लाह ने हम सबको यहाँ इस मजमे में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह हम सबको ऐसे मजमे में बार बार बैठने वाला बनाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। Hadirin kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa duduk di majlis yang sangat besar ataupun majlis yang sangat mulia. Datangnya kita ke sini ini bukan dengan sebab adanya keinginan kita, bukan dengan sebab karena kekuatan kita, tapi ini semata-mata mutlak kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat undangan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal untuk masuk ke dalam undangan tersebut. Maka bapak-bapak inilah orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dan lagi senantiasa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendudukkan kita di majelis-majelis seperti ini. Kemudian kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ketawajuhan ketika berada di dalam majelis tersebut. मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये मजलिस जो है बहुत ऊंची मजलिस है। इस वजह से अल्लाह के वादे भी बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे मजलिस पर अल्लाह का वादा है गुनाहों के माफ़ हो जाने का, और गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देते हैं ऐसे मजलिस में सिर्फ बैठने से। क्योंकि ये मजलिस वो मजलिस है जिसके वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। ये मजलिस उसी काम के लिए है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को इस फ़िक्र, एक मेहनत और फ़िक्र दे के भेजा। ये मजलिस भी उसी फ़िक्र और उसी मेहनत के लिए है। Dan hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Majelis ini adalah majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau menyampaikan majelis yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah-fadilah ataupun janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala terhadap majelis-majelis seperti ini itu sangat banyak sekali. Di antaranya beliau menyampaikan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak ngapa-ngapain, kita di sini hanya duduk-duduk saja. Tetapi selama kita duduk di sini, maka selama itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dosa-dosa kita diampuni, tetapi selagi dosa-dosa ini jatuh berguguran, kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa-dosa tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul untuk bagaimana mereka membuat majelis-majelis seperti ini. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan seorang rasul kecuali Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya membuat majelis-majelis di mana majelis ini ada fikir tentang agama, ada risau tentang agama, kemudian ada membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह ने हम सबको दुनिया में इंसान बना के भेजा है। हम सब खुद ब खुद इंसान नहीं बने। पहले कुछ और थे, फिर बाद में कुछ और हुए। एवोल्यूशन नहीं, क्रिएशन। अल्लाह ने हम सबको खालिक मखलूक बनाया और मखलूक में सबसे अशरफ मखलूक इंसान बनाया। ये अल्लाह ने अपने फजल से बनाया। इसको समझने की बात है। हम सब खुद ब खुद आए नहीं, अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाकर भेजा और इंसान के भलाई के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा है। तमाम नबी आए इंसान की भलाई के लिए, किस तरीके से दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में कामयाब हो जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को दुनिया में भेजा। Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang harus kita syukuri. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai manusia. Maka terjadinya kita ini sebagai manusia ini bukan dengan sebab keinginan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata mutlak keinginan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sebagai manusia. Beliau menyampaikan banyak sekali makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya makhluk yaitu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Dan dari semua makhluk-makhluk ini asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling baik adalah manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti pada situ saja, tidak menciptakan manusia kemudian dijadikan dia sebagai asyraful makhlukat, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin supaya manusia ini memiliki derajat yang lebih tinggi dari hanya sekedar makhluk asyraful makhlukat tadi, yaitu dengan diutusnya para nabi dan para rasul untuk mengajak manusia untuk mendakwahkan kepada seluruh umat manusia bagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada satu orang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia ini kecuali tujuannya adalah untuk mengajak semua umat manusia dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Inilah Allah Subhanahu wa taala, selain kita diciptakan sebagai semulia-mulianya makhluk, Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita ini berada di derajat yang lebih tinggi dari itu, yaitu bagaimana kita ini mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat dengan menerima setiap ajakan daripada para nabi. अल्लाह ने हम सबको दुनिया में इंसान बनाकर भेजा। ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर अल्लाह हमको इंसान नहीं बनाते, कुछ और मखलूक बना देते तो क्या होता? सोचें, अगर कोई जानवर बना देते तो हमारा क्या होता? अल्लाह ने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात अल्लाह के नज़र में एक एक इंसान कितना कीमती है। सूरज, ज़मीन, आसमान सब अल्लाह ने बनाया इंसान के फ़ायदे के लिए। और इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी इबादत की, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इंसान बन के आना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर इंसान नहीं बनते, कुछ और बनते तो फिर क्या बनते, हमारा क्या होता, ये सोचे। Maka Allah Subhanahu wa taala
sebaik-baik makhluk adalah manusia. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tujuannya adalah supaya umat manusia ini mendapatkan kebahagiaan. Maka Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan ataupun kesuksesan ini tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Contoh misalnya kepada para hewan ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, misalnya makhluk-makhluk yang lain itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti matahari, kemudian bulan ataupun bumi ataupun langit, itu semuanya adalah supaya manusia bisa mengambil faedah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah supaya makhluk-makhluk selain manusia ini berkhidmat kepada manusia. Adapun manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak ada manusia di dunia ini, maka Allah SWT tidak akan menciptakan alam semesta. Tidak ada kebahagiaan bagi para hewan. Maka Allah SWT, hendaklah kita berpikir apa maksud dan tujuan Allah SWT menciptakan kita sebagai manusia. Kenapa Allah SWT tidak menciptakan kita sebagai hewan? मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का दूसरा एहसान हम सब पर यह हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको ऐसे घरों में भेजा जहाँ के रहने वाले ईमान वालियाँ थी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी। अल्लाह ने हम सबको ऐसे घर में भेजा और उस घर में रह के, उस घर के माहौल से मुतासिर होके हम सब ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सिर्फ हमने ज़ुबान से इस कलमे को नहीं पढ़ा, बल्कि दिल से भी हमने इस कलमे को कबूल किया। इस वजह से हम सब ईमान वाले हो गए। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang lain yang harus kita syukuri, yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan kita, yaitu dari rumah-rumah kita sampai kepada tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ataupun mengeluarkan kita dari rumah-rumah kita kepada tempat ini adalah untuk bagaimana kita bisa menyempurnakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin keadaan rumah kita ini kurang baik sehingga Allah Subhanahu wa taala kirim kita di tempat-tempat seperti ini, yaitu maksudnya adalah untuk menyempurnakan kalimat tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak cukup hanya dengan kita banyak-banyak membicarakannya saja. Tidak cukup hanya dengan kita banyak-banyak mengucapkannya saja, tetapi bagaimana dua kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam hati kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah ada di dalam hati kita. और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नज़र में एक एक ईमान वाला बहुत कीमती है। एक ईमान वाला इस दुनिया में रहेगा, चाहे वो कैसे भी अमाल करता हो, लेकिन ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह कहता होगा तो अल्लाह उसकी वजह से पूरे कायनात को बचा कर रखेंगे। कुल कायनात, सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, बारिश का होना, ज़मीन से अनाज होना, ये जितने काम हम होते हुए देख रहे हैं दुनिया में, ये सब एक ईमान वाले की वजह से। एक ईमान वाला जब तक पूरी दुनिया में रहेगा, अल्लाह पूरी कायनात को बचा के रखेगा। एक एक ईमान वाला इतना कीमती है अल्लाह की नज़र में। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan kalimat iman, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, beliau menyampaikan bahwa di alam semesta ini yang Allah Subhanahu wa taala pandang hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan bahwa pergerakan ataupun tertib-tertib sistem dunia ini masih berjalan, sistem alam semesta ini masih berjalan dengan sebab ada orang beriman yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalaulah di dunia ini tidak ada orang yang beriman, tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, satu orang yang beriman
di dunia ini sudah cukup, satu orang saja sudah cukup untuk menjalankan sistem dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, दूसरी जगह आया है कि ये ईमान, जर्रा बराबर ईमान अगर कोई यहाँ से बचाकर अल्लाह के पास लेके चला जाए तो उसके बदले में अल्लाह सुब्हान ताला इस दुनिया से कम 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekecil-kecilnya iman, saking berharganya orang-orang yang beriman, sekecil-kecilnya iman walaupun dia sebesar biji zarrah, maka hari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalas keimanan tersebut di akhirat dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. ये तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों ईमान के ज़ोफ़ पर है। सबसे कमज़ोर ईमान आपको इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमा देगा, और जिसका ईमान बहुत मजबूत होगा उसको अल्लाह क्या देगा, थोड़ा सोचो। Hari Allah Subhanahu wa taala itu 10 kali lipat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman, yang imannya paling lemah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Sekarang bagaimana posisi orang yang beriman kemudian dia memiliki keimanan yang kuat? Maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Hendaklah kita berpikir. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ईमान बहुत ज़रूरी है। ईमान का बनाना, ईमान का बढ़ाना और ईमान का बचाना, ये 3 काम है। ईमान को बनाना है, ईमान को बढ़ाना है और ईमान को बचाना है। ये 3 काम हम सबको करना है यहाँ, इसीलिए हम सब यहाँ इस मरकज में आए हैं। Allah Subhanahu wa taala, iman ini adalah perkara yang paling berharga. Maka ada 3 perkara yang harus kita perhatikan tentang perkara iman. Yang pertama adalah bagaimana kita usaha untuk bagaimana iman masuk ke dalam hati kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana iman yang sudah masuk ke dalam hati kita ini senantiasa meningkat dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana iman yang sudah kita usahakan ini terjaga dalam hati kita. Jadi 3 perkara ini yang harus kita perhatikan supaya Allah Subhanahu wa taala keimanan senantiasa ada dalam kehidupan kita. तो हम सब अपने ईमान को बनाएंगे, बढ़ाएंगे और बचाने की मेहनत में लगेंगे इंशाअल्लाह। Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ke markas ini adalah untuk bagaimana kita ini membuat iman, kemudian meningkatkan iman, kemudian menjaga iman. Bersedia semuanya Pak insyaallah? इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अब वो मेहनत क्या है जिस मेहनत के जरिए ईमान बनेगा। आज मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत ईमान वाले हैं। आपके अकेले इंडोनेशिया में 250 मिलियन ईमान वाले हैं, इंडिया में 200 मिलियन, ये 2 मुल्क में मिला के 450 मिलियन ईमान वाले हैं, और पूरी दुनिया में मोर देन 250 मिलियन ईमान वाले हैं। Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menyampaikan iman ini adalah perkara yang paling berharga. Bagaimana supaya iman ini ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Beliau menyampaikan sekarang mungkin banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai beriman. Misalnya di Indonesia saja beliau mengatakan tadi 250 juta seseorang yang mengaku beriman, yaitu orang Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan lagi kalau di India itu sekitar 200 juta. Kalau dikumpulkan berarti 450 juta. Kemudian kalau secara keseluruhan di dunia ini itu orang beriman sekitar ada 1 miliar lebih. Maka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam kehidupan kita ini kita ada usaha atas iman. आज हमारी तादाद बहुत है, बहुत कसीर है, लेकिन आज हम पूरी दुनिया में जलील व खार हैं। इसकी क्या वजह है? Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan itu jumlah 1 miliar orang yang beriman, itu jumlah yang sangat banyak sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, jumlah dari sekian banyak orang yang beriman ini, kenapa orang beriman begitu di zaman ini begitu rendah derajatnya? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिसका मफहूम है
इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए। लेकिन ईमान वाले आज इज्जत से खाली है। वजह क्या है? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil izzatu walirrasuli walil mu'minin." Yaitu kemuliaan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pada Rasulullah SAW atau para rasulnya, kemudian ada pada orang beriman. Sekarang mana tanda-tanda kemuliaan pada orang beriman itu sekarang mana? Sekarang orang beriman di mana-mana mereka dihinakan. वजह यह है कि हमारी जिंदगी दीन से खाली है। हमारी जिंदगी दीन से खाली। आज 5% मुसलमान, 5% सिर्फ दीन पर चल रहे हैं। 95% दीन छोड़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang beriman hari ini ataupun pada zaman ini begitu hina, direndahkan di mana-mana? Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman pada hari ini mereka kosong daripada agama. Kehidupannya tidak mengamalkan agama. Kalaulah dari 1 miliar tadi ataupun 100% orang yang beriman tadi, 5% saja orang-orang yang mengamalkan agama ataupun yang di kehidupannya ada agama. 95% adalah orang-orang yang beriman yang tidak mau mengamalkan agama. और ये 5% जो दीन में चल रहे हैं उनके जिंदगी में भी कामिल दीन नहीं है। 50% दीन है, 50% दीन नहीं है। Allahu Akbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari 5% tadi disaring lagi Allah Subhanahu wa taala 50%. 50% dari 5% tadi, yaitu setengahnya orang yang semangat dalam menjalankan keimanannya dan agama. Kemudian 50% lagi dari 5% tadi, yaitu orang-orang yang bermalas-malasan dalam menjalankan agamanya. हमारा ईमान ऐसा है कि उसमें शिर्क मिला हुआ है, इसलिए अल्लाह ने हम सबको इज्जत से हटा के जिल्लत में डाल दिया। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu lemah keimanan kita hari ini. Harusnya orang beriman itu memiliki kemuliaan dengan sebab tidak ada agama dalam kehidupan orang-orang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kehinaan kepada orang-orang beriman. हम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, अपने मसाइल को हल कराते हैं मस्जिद के बाहर असबाब से। Allahu Akbar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan kita tadi salat maghrib. Mungkin kita salat maghrib di masjid ini, di tempat ini, di markas, tetapi lebih banyak kita memikirkan perkara-perkara yang ada di luar masjid dibanding kita tawajuh dalam salat. हालांकि अल्लाह सुब्हानु ताला ने हम सबको नमाज इसलिए दिया था कि अल्लाह सुब्हानु ताला से अपने तमाम मसाइल को बराह रास्त हल करा ले, इसलिए अल्लाह ने हम सबको नमाज दिया था। Padahal Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, memerintahkan supaya kita mengerjakan salat, tujuannya adalah bagaimana seluruh masalah-masalah kita ini kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dan tujuan salat. Tetapi kita hari ini kita salat, kemudian kita memikirkan masalah-masalah kita di luar, tidak mengadukannya kepada Allah. ये वजह है हमारी तनज़्ज़ुली की। नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं आखिरत के बनाने के लिए, और फिर दुनिया के काम में लगते हैं दुनिया का काम बनाने के लिए। अल्लाह सुब्हानु ताला हमारे दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी को दीन में रखा। सिर्फ आखिरत की कामयाबी दीन में नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी को अल्लाह सुब्हानु ताला ने दीन में रखा है। Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada salat ini adalah untuk bagaimana kita ini memperbaiki akhirat kita. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini kita berusaha bagaimana dengan salat ini kita memperbaiki dunia saja. Padahal maksud dari salat dua-duanya ini kita bisa perbaiki dengan salat tadi, yaitu kita dengan salat kita bisa memperbaiki dunia kita bisa memperbaiki akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ada agama dalam kehidupannya, bukan saja mereka di akhirat kemudian mereka mendapatkan kebahagiaan, tetapi tanda-tanda orang yang ada agama dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. हमारे और सहाबा की जिंदगी में यही फर्क है। वो भी ईमान वाले मुसलमान थे, हम भी ईमान वाले मुसलमान हैं, लेकिन वो अपने मसाइल को हल दीन के जरिया कराते थे। वो समझते थे कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, नफ़ा नुकसान इज्जत जिल्लत कामयाबी नाकामयाबी सब अल्लाह के पास में, अल्लाह ही पूरे कायनात को बनाने वाला है, अल्लाह खालिक है, मालिक है, अल्लाह राज़िक है। हमारा ईमान कमज़ोर है, इसलिए हम आखिरत के लिए दीन का काम करते हैं और दुनिया के लिए दुनिया का काम करते हैं।
Maka Allah Subhanahu wa taala, inilah perbedaan kita dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka yaitu dengan tawajuh kepada perkara agama. Sedangkan kita hari ini Allah Subhanahu wa taala, kita telah memisah-misah perkara tersebut. Kalau kita ingin supaya kita akhirat kita baik, kita selesaikan dengan agama. Kalau kita ingin supaya dunia kita baik, kita kerja dunia. Ini adalah pemikiran yang salah. Para sahabat radhiyallahu taala mereka memperbaiki dunia dan akhirat mereka dengan agama. Hari ini kita ingin memperbaiki akhirat kita dengan agama, ingin memperbaiki dunia kita dengan dunia. Ini adalah perkara yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dunia dan akhirat kita baik, kuncinya hanya satu, yaitu dengan perkara agama. सहाबा थोड़े से थे, कलील, पूरी दुनिया पे फाते थे। कैसर और किसरा के ताज उनके पैरों के नीचे आया था। बड़े बड़े सुपर पावर रोम, पर्शियन उनके सामने शिकस्त हो गए। थोड़े से सहाबा थे और हम लोग आज हमारा बादशाह है वो भी गुलाम है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो भी गुलाम है। और वो थोड़े से थे, कलील थे, कमजोर थे, लेकिन पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। Allah Subhanahu wa taala, itulah keyakinan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa para sahabat bisa fokus ataupun tawajuh kepada agama? Karena para sahabat yakin bahwa yang bisa menyelesaikan masalah hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Yang memberikan manfaat adalah Allah, yang memberikan masalah adalah Allah, yang berbuat segala sesuatu adalah Allah. Sehingga para sahabat memperbaiki dunia dan akhirat mereka hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jumlah sahabat radhiyallahu taala anhum ketika di zaman itu hanyalah sekelompok yang kecil ataupun sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Romawi dan Persia, Kaisar dan Kisra, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala takluk di kaki-kaki para sahabat radhiyallahu taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mereka bisa mentaklukkan negara-negara yang besar yang memiliki penduduk-penduduk yang banyak? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum dia tawajuh kepada Allah dan sibuk dengan perkara agama. Padahal mereka sama seperti kita juga. Kita adalah hamba, para sahabat ini adalah hamba. Para sahabat ini sedikit, bahkan kita hari ini lebih banyak dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Tapi kenapa kita tidak bisa mentaklukkan negara-negara yang besar? Kenapa? Karena keimanan kita hari ini lemah, agama kita hari ini lemah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki keimanan yang kuat dan agama yang kuat. उनके दिल का यकीन, हमारे सहाबा के दिल का यकीन ये था कि पूरी कायनात का एक एक मखलूक, एक एक जर्रा जैसे बनने में अल्लाह का मोहताज है, इसी तरीके से किसी को नफ़ा नुकसान देने में भी अल्लाह का मोहताज है, खुद मुख्तार नहीं है। उनके दिल का यकीन था, हमारे दिल का यकीन वो नहीं है। हम मुतासिर होते हैं, हम चीज़ों को देख के मुतासिर होते हैं, हम मेजॉरिटी को देख के मुतासिर होते हैं, हम पैसे को देख के मुतासिर होते हैं, हम हर चीज़ से मुतासिर होते हैं। सहाबा किसी से मुतासिर नहीं होते थे। सहाबा के एक कमज़ोर सहाबा किसरा को कहता है, टूटी हुई तलवार, फटा हुआ कपड़ा, पेट खाली, कहता है बादशाह तू अगर अपनी सलामती चाहता है तो इस्लाम कबूल कर, अगर ये बात तुझे पसंद नहीं तो मुझे टैक्स दे, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये बात पसंद नहीं है तो मैदान में आ, अल्लाह फैसला करेगा। Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala mereka memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menyempurnakan agama mereka. Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yakin bahwa yang berkuasa hanyalah Allah, yang berkehendak adalah Allah, yang berbuat adalah Allah, nafa' dan nuksan, yaitu manfaat dan mudarat adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu taala mereka hanya tawajuh kepada Allah karena yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, सहाबा जो काम करते हैं अगर वो काम हम भी करें तो हमारे भी दिल का यकीन वैसा होगा। सहाबा 100% दाई थे, वो लोग अल्लाह के लिए अपने जान माल वक्त को फारिग करके रखते थे, इसलिए अल्लाह उनके दिल का ईमान ऐसा बना और अल्लाह की मदद उनके साथ रही। आज भी हम
भी सहाबा के तरह अपने जान माल वक्त को लेके अल्लाह के दीन की मेहनत में दावत के काम में लग जाए तो आज हमारी जिंदगी में दीन पूरा का पूरा आएगा। दावत से दीन आएगा, दीन से अल्लाह ताला खुश होंगे, अल्लाह ताला खुश होंगे, हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बनाएंगे। Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mereka begitu mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka berusaha sungguh-sungguh dalam usaha agama, sehingga dengan sebab usaha mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka agama, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka pertolongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini nama sahabat radhiyallahu anhum itu masih mulia. Dengan sebab apa? Dengan sebab mereka sungguh-sungguh dalam buat usaha atas agama. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kita hari ini buat keputusan bagaimana saya ini ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemudian bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama dalam kehidupan saya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus sungguh-sungguh dalam usaha dakwah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena usaha dakwah ini adalah usaha satu-satunya untuk mendatangkan agama. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka usaha agama, maka hasil dari usaha agama tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka agama yang sempurna. Begitu juga kalau kita ingin bagaimana agama kita sempurna, kita ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bersungguh-sungguh, maka kita juga harus bersungguh-sungguh, yaitu dengan usaha agama, usaha dakwah, dan hasilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita agama yang sempurna. Dan dengan sebab agama yang sempurna ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita ini kemuliaan. अल्लाह ने हम सबको दुनिया में दाई बना के भेजा है और उसी के लिए सब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी आई हैव सेंट यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में हम सबको भेजा है वो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए, और वो दावत का काम है। क्या काम? लोगों को भलाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना और कहना कि हम भी ईमान वाले। ये काम जब तक ये पूरी उम्मत कर रही थी, अल्लाह की मदद और पूरी दुनिया में इनको इज्जत मिला हुआ था और पूरी दुनिया में फाते थे। Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini, mengirimkan kita ke dunia ini adalah untuk menjadi seorang dai. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengajak kepada seluruh umat manusia untuk bagaimana mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian kemudian menjadikan kalian sebaik-baik umat, yaitu untuk seluruh umat manusia, mengajak kepada perkara kebaikan, kemudian mencegah dari kemungkaran. Kalau seandainya kita berusaha dalam perkara tersebut, dalam usaha dakwah, dalam usaha agama, maka dimanapun kita berada di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita lipat ganda, yaitu kemuliaan-kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah target dan tujuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kita ke dunia ini adalah untuk bagaimana kita ini menjadi seorang dai. सहाबा के एक एक फर्द दाई, सहाबा का बूढ़ा दाई, सहाबा का बच्चा दाई, सहाबा का मर्द वो भी दाई, सहाबा की औरतें वो भी दाई, सहाबा का अमीर दाई, सहाबा का गरीब दाई, सहाबा का पढ़ा लिखा वो भी दाई, और सहाबा में जो लोग अनपढ़ थे वो भी दाई थे। हर कोई मिलकर इस दावत के काम को करे हुए थे और समझे हुए थे कि इसी जिम्मेदारी के लिए हम सब दुनिया में आए, और ये लोग सब उस काम को तकाजा पूरा कर रहे थे और पूरी दुनिया में अल्लाह ताला उनको फाते और बादशाहियत भी रखी थी। Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salah seorang sahabat pun yang mereka tidak menjadi dai. Baik sahabat itu yang tua, dia adalah seorang dai, kemudian sahabat yang muda, dia seorang dai, kemudian sahabat yang kecil, dia seorang dai, kemudian sahabat ataupun sahabiah yang wanita, mereka adalah seorang dai. Begitu juga kaum laki-lakinya, mereka seorang dai. Yang kayanya mereka seorang dai, yang miskinnya mereka seorang dai, yang sehat mereka seorang dai, kemudian yang sakitnya pun mereka seorang dai. Sehingga dimanapun para sahabat radhiyallahu anhum dikirim, maka mereka bisa mewarnai agama dalam kehidupan umat-umat yang ada di sekitar mereka. Maka Allah SWT, kalau hari ini kita putus bahwa saya ini adalah seorang dai, dimanapun kita berada, pasti Allah SWT akan berikan kepada kita kemuliaan. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, वो लोग दाई थे इसलिए
100% दीन उनके जिंदगी में था। हमने दावत के काम को छोड़ा तो हमारी जिंदगी से इबादत भी निकल गया। Allah Subhanahu wa taala para sahabat radhiyallahu taala mereka 100% adalah seorang dai, sehingga Allah Subhanahu wa taala mereka bisa menyempurnakan agama. Hari ini kita tidak menjadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Jangankan agama masuk dalam hidup kita, bisa jadi setiap perkara-perkara ibadah ini kita akan tinggalkan dengan sebab kita tidak tawadhu dalam usaha dakwah. इसलिए हम सब मिलकर इस दावत के काम करेंगे इंशाअल्लाह। Maka Allah Subhanahu wa taala hendaklah semuanya bapak-bapak yang ada di sini kita jadikan usaha dakwah ini sebagai jalan dan maksud hidup kita. Bersedia semuanya insyaallah. इंशाअल्लाह इसके लिए सबको इरादे करें, पूरी दुनिया में करना इंशाअल्लाह। सारे सबसे ओके इंशाअल्लाह। थैंक यू। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस काम ही के लिए हम सब दुनिया में आए हैं। अल्लाह ने जन्नत के बदले में हम सब के जान माल को खरीद लिया। ये जान हमारा नहीं, ये माल हमारा नहीं, पहले भी हमारा नहीं था और फिर जन्नत के बदले में हमने सबको बेच दिया। हमने इस सबको अल्लाह को बेच दिया, हम लोग तय कर लिया जन्नत में जाना है तो जान मेरा नहीं है, माल मेरा नहीं, ये अल्लाह का है और अल्लाह के काम में लगाना है इंशाअल्लाह। Hari ini Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita ini menentukan kapan kita akan berangkat, kapan kita akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencatatkan nama-nama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bahwa diri, waktu dan harta kita itu semuanya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, kebodohan kita hari ini kita menyangka, oh diri saya ini milik saya, waktu saya milik saya, kemudian harta saya milik saya. Bagi seseorang yang menyangka semua yang diberikan Allah adalah milik dia, dia tidak akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala seseorang yang menyangka bahwa dirinya adalah milik Allah, waktunya adalah milik Allah, kemudian hartanya adalah milik Allah, kemudian mereka korbankan semuanya ini untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka baru pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan putus, aku telah membeli seluruh harta diri dan waktumu dan aku telah membayar sebagai surga. Maka Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini adalah amanah. Bagaimana setiap amanah ini akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan lagi kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala kita dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. सहबा ने अपने जान और माल को लगाया, उनकी जिंदगी दावत के पहले कैसे थी और फिर दावत की मेहनत के बाद में कैसा हुआ, इसको समझना है मेरे भाई। तो फिर हमारे भी जिंदगी में वो बदलाव आएगा और फिर इस बात का यकीन बनेगा कि इस काम ही से अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी को रखा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इस फरमाया हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप फरमा दीजिए कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। Hari ini Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu taala sebelum mereka menjadi seorang dai, bagaimana kehidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mereka ini menjadi seorang dai, maka kita perhatikan juga bagaimana kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah merubah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala, yaitu dengan sebab ada satu orang dai sehingga bisa mewarnai kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Sebelumnya kehidupan para sahabat radhiyallahu taala begitu hancur, begitu rusak, tetapi ketika mereka menjadi seorang dai, Allah Subhanahu wa taala telah merubah kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita putuskan diri kita ini adalah sebagai seorang dai, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehidupan kita. Bapak-bapak telah merasakan bagaimana kehidupan saya sebelum saya kenal usaha dakwah ini, dan bagaimana kehidupan saya setelah saya ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan firman qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, yaitu ini adalah jalanku, usaha dakwah ini adalah jalanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajak seluruh umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan basirah, dengan ketaatan, dengan keyakinan, kemudian dengan basirah yang ada di dalam hati. सहाबा में जो भी ईमान लाते थे वो ये समझते थे कि अब मेरा काम वही काम है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है, यानी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है।
Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat radhiyallahu anhum sudah dimasukkan ke dalam hati mereka iman, maka mereka langsung memiliki pemahaman bahwa kerja saya adalah kerja yang harus mirip dengan kekasih saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka harus memiliki kerja yang sama sebagaimana kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. इस काम की बसीरत क्या है कि इस काम ही में हमारे दोनों जहां की कामयाबी का यकीन हो कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी अल्लाह ने हमारा इसी काम के अंदर में रखा है। ये इस काम की बसीरत है। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata basirah. Maka apa itu basirah? Beliau menjelaskan basirah yaitu bagaimana setiap keyakinan yang ada dalam kehidupan kita ini kita letakkan dalam usaha dakwah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala, saya akan bahagia, saya akan mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan dan kejayaan apabila saya letakkan kehidupan saya di dalam usaha dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud dengan basirah, meletakkan keyakinan ini dalam usaha agama. सहाबा पार्ट टाइम दूसरा काम करते थे, फुल टाइम दाई। सहाबा हम पार्ट टाइम दाई, फुल टाइम दूसरा काम करते। Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu taala mereka mengambil sebagian kecil kehidupan dunia, kemudian sisanya untuk dakwah. Kali ini kita Allah Subhanahu wa taala mengambil kehidupan kita yang kecil untuk dakwah, kemudian sisanya kita untuk urusan dunia. ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो दावत के काम में लगे हुए हैं, और जो काम दावत के काम में नहीं लगे हुए उनका तो कुछ कहना ही नहीं। Allah Subhanahu wa taala, itu yang orang-orang yang ambil bagian dalam usaha dakwah, yang sudah mengambil bagian dalam usaha dakwah, mereka seperti itu. Mereka menggunakan waktu sisa mereka ini untuk dakwah, kemudian selebihnya untuk dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak ikut ambil bagian dalam usaha dakwah? Mereka sudah bisa dipastikan sibuk dengan dunia. इसलिए हम लोग सब इस काम को अपना काम फुल टाइम काम बनाएं। पार्ट टाइम बाहर का काम, दुनिया का काम पार्ट टाइम, फुल टाइम दावत का काम, इंशाअल्लाह। Maka Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita buat bagaimana waktu kita ini kita gunakan yang paling banyak dulu adalah untuk perkara dakwah, kemudian sisanya baru kita gunakan untuk perkara yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat radhiyallahu anhum yang telah menggunakan seluruh masa waktunya ini untuk dakwah, kemudian sisanya baru untuk perkara yang lain. Kalau kita buat perkara seperti itu, barulah kita Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan. Bersedia semuanya insyaallah. सहाबा में सब मुजाहिद थे, कुछ अंसार कुछ मुहाजिर, लेकिन सब मुजाहिद। Para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah para pejuang, mujahidin, baik para sahabat yang dari kaum Ansar ataupun kaum Muhajirin, mereka dua-duanya adalah mujahid. ये सहाबा का सिफात था। Ini adalah sifatnya sahabat radhiyallahu anhum. वो सब मदीना के लोग थे, वो किसान का काम करते थे, और जो मुहाजिर थे वो बिजनेस करते थे, और कुछ ऐसे थे जो कुछ भी नहीं करते थे। हजरत अबू हुरैरा, हजरत अनस, हजरत हुज़ैफा, ये सब कौन थे? ये असहाबी सुफा वाले थे। ये जिक्र करते थे, तिलावत करते थे, कुरान करते थे। ये तीन तबका में सहाबा बटे हुए थे। लेकिन जब जिहाद का वक्त आता था, जब अल्लाह के रास्ते में निकलने का वक्त आता था, तो किसान अंसार अपनी किसानी को छोड़कर आते थे, मुहाजिर अपने तिजारत को छोड़ के आते थे, और अंसार अपने जिक्र और अस्कार को छोड़ के आके जमात में जमा होते थे, और सब अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर बनते थे। Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah sahabat yang ahlu sufa, yang tidak ada kegiatan bisnis dunia. Contoh misalnya seperti Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Anas, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala, ataupun sahabat-sahabat ahlu sufa yang lain. Mereka ini adalah sahabat yang tidak memiliki kerjaan dunia, yang tidak memiliki bisnis dunia. Kemudian ada sahabat kaum Ansar yang mana mereka mengambil dari 1 tahun ini sepertiganya, jadi sekitar 4 bulan, yaitu untuk usaha agama, untuk perkara bisnis mereka, untuk dunia mereka 4 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala, kenapa 4 bulan mereka untuk usaha dunia, untuk bisnis mereka, kemudian 4 bulan lagi mereka untuk membantu Rasulullah SAW dalam menjamu tamu-tamu yang datang ke Madinah, kemudian
4 bulan lagi baru mereka untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat yang muhajirin. Sahabat muhajirin ini terbagi menjadi 2. 6 bulan mereka untuk usaha dunia, kemudian 6 bulan lagi untuk usaha akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sahabat Ansor yang sudah meluangkan waktu 4 bulan untuk usaha dunia, kemudian sahabat muhajirin 6 bulan untuk usaha dunia. Tetapi tetap ketika ada seruan dari Rasulullah SAW untuk berjihad, maka mereka pun meninggalkan usaha dunia mereka dan mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi adalah sahabat yang Abu Sufyan, mereka senantiasa siap keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. सब मिलकर दावत के काम में जाते थे। ये नहीं है कि वो गए मैं नहीं गया, नहीं, सब अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। और फिर सब इस दावत के काम की वजह से अल्लाह ने उन सबको दुनिया में भी नवाजा, इतना नवाजा कि किसी को गवर्नर बनाया, किसी को बादशाह बनाया। और फिर ये गरीब लोग थे, खाना नहीं था, अल्लाह ने गले के जगह पर सोना और चांदी इनके घरों में रखे। ये सिर्फ दावत की मेहनत से था। ये दावत की मेहनत, अल्लाह के रास्ते में निकलने के खुरूज की मेहनत पर अल्लाह ने इन सबको ऐसा किया। Hari ini subhanallah, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ada seruan jihad, mereka tidak menyalahkan satu sama lain. Hari ini kita pandai mentasbih orang lain, tetapi kita tidak pandai mentasbih diri kita sendiri. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika ada seruan untuk jihad, tidak ada yang mengatakan begini, oh bilang kamu yang keluar, saya sudah nisab, saya sudah keluar. Tidak ada, semuanya berangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ketika ada seruan jihad kemudian semuanya berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala buka pintu hak dunia. Ada yang sahabat yang dijadikan sebagai raja, ada sahabat yang dijadikan sebagai menteri, ada sahabat yang dijadikan sebagai gubernur, ada sahabat-sahabat yang dijadikan sebagai pemimpin kabilah. Dengan sebab apa? Mereka senantiasa siap untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu adalah sahabat-sahabat yang mereka ini tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemuliaan dengan sebab mereka ambil bagian, dan kapanpun mereka ini diperintahkan untuk berangkat keluar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat. सहाबा में जो बूढ़े हो जाते थे वो काम से रिटायर नहीं होते थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब 94 इयर्स जब उनका उम्र हो गया तो जमात कहाँ जा रही है? अंकारा, तुर्की। वो जमात में वो भी बोलते हैं कि हमको भी ले चलो। साहबा कहते हैं आप ज़ईफ हो गए, जिंदगी भर आपने इस मेहनत को किया है, अब आप बीमार हैं। बोले बीमार है तो क्या हुआ? ये कुरान की आयत है, इनफिरू खिफाफा व थकाला, ये हमको घर में रहने नहीं देती। ये तो ऐसा है कि साहिब को कुरान से निकाल लो, वरना हमको अल्लाह के घर से लेके चलो। और सुनो, तुम रास्ते में लेके चलना, तुम्हारा आखिरी मंजिल वहां है, वहां तक लेके जाना। अगर मैं रास्ते में मर गया तो भी मेरी लाश को लेके चलना और वहां जाके चलना जहां तुम्हारा आखिरी मंजिल हो। कल क़यामत में मैं ये कहूंगा कि अल्लाह, मैं जिंदगी भर तेरे रास्ते में चला, यहाँ तक कि मैं मर गया तो हमारा लाश भी तुम्हारे रास्ते में चला। Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak mengemukakan alasan-alasan ketika mereka diperintahkan untuk berjihad ataupun keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang paling berat bagi kita adalah orang-orang yang tua, yaitu orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun berumur. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak melihat usia mereka. Contoh yang beliau sampaikan adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau berumur 94 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ada seruan jihad, yaitu kemana? Ke daerah Ankara, Turki. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pun ikut daftar dalam jamaah tersebut. Maka para sahabat yang lain mengatakan, wahai Abu Ayyub radhiyallahu anhu, engkau sudah tua, kemudian engkau sudah sakit, engkau sudah udur, umur engkau sudah 94 tahun, kalau engkau tidak berjihad tidak mengapa. Maka apa kata Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari? Baik, saudaraku, apa engkau tidak membaca Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun berat, berangkatlah kalian dalam keadaan tua ataupun muda, berangkatlah kalian dalam keadaan punya uang ataupun tidak punya uang. Maka Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kepada para pasukan untuk bagaimana membawa aku terus sampai titik tempat kalian, sampai kepada tempat yang ingin kalian tuju. Kalau seandainya aku meninggal di pertengahan jalan, belum sampai pada tempat yang ingin dituju, terus bawa jenazah aku sampai di tempat di sana, kemudian baru kuburkan di sana.
sehingga aku akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala pada akhirat, ya Allah, aku tidak bermain-main dalam usaha agama. Aku dibawa jasadku ini sampai titik tempat di mana pasukan kaum muslimin berada di sana. Walaupun aku ini sudah meninggal dunia, aku ingin tetap supaya jasadku ini berada di sana agar aku bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. हम भी नियत करें कि हमारी भी मौत अल्लाह के रास्ते में हो, घर में मौत नहीं हो, क्योंकि इस पर अल्लाह के बहुत बड़े वादे हैं कि जो अपने घर के पैदाइश की जगह से दूर मरेगा, अल्लाह उतना बड़ा महल एक मोती का बना के जन्नत में देंगे। और अल्लाह के रास्ते का मौत घर के मौत से बहुत आसान मौत है। Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka bapak-bapak semua yang ada di sini, termasuk kita semua yang kita niat, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ketika kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat banyak sekali fadilah orang-orang yang meninggal dunia ketika mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang meninggal, mereka sedang keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga seluas dari jarak rumahnya sampai tempat mereka tasbih. Maka Allah Subhanahu wa taala, jangan kita niat mati di dalam rumah, jangan kita niat mati di rumah kita di tempat tinggal kita, tetapi kita niat untuk bagaimana ketika kita ini berada dalam keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niat kita ingin supaya Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita di sini. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये तो बूढ़े का हाल था, बच्चे का ये हाल है कि बदर का मौका है, उसमें बच्चे, दो बच्चा, एक तो हजरत मुआज नाम है, वो साहबी अमर बिन जम्मू, उनका लड़का, दो लड़का, ये दो बच्चे वो गए बदर में, और अबू जहल को अल्लाह ने उनके हाथों से शहीद करवाया। ये बच्चे भी जाते थे अल्लाह के रास्ते में उस जमाने में, और वो तो बच्चे हैं, घर की औरतें वो भी अल्लाह के रास्ते में निकलती थी, ये घर की औरतें वो भी अल्लाह के रास्ते में जाती थी। हजरत सफिया, हजरत अस्मा, हजरत रुमान, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या है ग़ज़वे उहद में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि जब मुसलमान नरगे में आ गए, जब डिफीट में आ गए, तो काफिर मुशरिक ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया कत्ल की नियत से, नौज़ुबिल्लाह। वहां पर हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब दाएं देखते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तलवार से हिफाजत कर रहे हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बाएं देखते तो वही औरत वहां पर तलवार चला के उनकी हिफाजत कर रही। ये तो हमारी सहाबा की औरतें का काम था। Allah Subhanahu wa taala tadi adalah kisah seorang yang sudah tua, yaitu sahabat yang sudah tua yang memiliki semangat untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kisah bagi pemuda ataupun anak-anak di zaman sahabat radhiyallahu anhum, pemuda ataupun anak-anak ini mereka juga memiliki semangat yang tinggi untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua sahabat anak-anak yaitu Allah Subhanahu wa taala, dua sahabat ini yang masih muda, yang masih anak-anak ini, dia berhasil melukai Abu Jahal ataupun membunuh Abu Jahal. Agar Allah Subhanahu wa taala begitu semangatnya pemuda ataupun anak-anak di zaman sahabat radhiyallahu anhum sampai mereka ini bisa membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pemuda saja, tetapi ada kaum-kaum wanita yang mana Rasulullah SAW ketika keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, beliau membawa ummahatul mukminin seperti Sayyidina Sofia, kemudian Sayyidina Ummu Habibah, Ummu Salamah, dan berbagai macam dari kaum wanita itu mereka diajak untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di perang Uhud, yaitu ada Ummi Ammarah, yang mana mereka, yang Ummu Ammarah radhiyallahu taala ini ikut ambil bagian dalam perang Uhud. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung dengan orang kafir di peperangan Uhud, yang mana ketika itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan, maka Ummi Ammarah ini melihat bahwa Rasulullah SAW sedang dikepung, maka dia lari kemudian menghadap di depan Rasulullah SAW. Ketika orang kafir yang sebelah kanan ingin menebas ataupun membunuh nauzubillah min dzalik, yaitu Rasulullah SAW, maka Ummi Ammarah ini langsung menangkis pedang tersebut.
Kemudian ketika ada dari sebelah kiri yang ingin membunuh Rasulullah SAW, maka Umi Ammarah juga menangkis pedang tersebut. Bayangkan Allah SWT, orang tua, pemuda, wanita, mereka semua baik sahabat ataupun sahabiah semangat ketika mereka keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा गुनाह है ये कि हमने दावत के काम को एडिशनल काम समझा, हमने इसको फर्ज नहीं समझा, बल्कि ये काम तो उम्मुल फराइज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दावत का काम किए, दावत से ईमान बना, ईमान मजबूत हुआ, उसके बाद 10.5 साल के बाद में नमाज आया, 10.5 साल बाद फिर हिजरत के बाद में फिर और अमाल जो है वो आया। सबसे पहले ये काम दावत है, वो ईमान का काम है। ईमान का अमल क्या है? दावत है। दावत अल्लाह के बंदों में चल फिर कर उसको अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह की बड़ाई बताना कि अल्लाह ही है, सब कुछ करने वाला ज़ात एक अल्लाह है, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है, सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह सब कुछ के बगैर सब कुछ करता है। Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebodohan kita hari ini ataupun kelalaian kita hari ini adalah kita menjadikan usaha dakwah ini sebagai usaha sambilan saja. Kalau ada waktu luang baru kita buat dakwah, kalau tidak ada waktu luang kemudian kita tidak buat dakwah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dakwah ini adalah usaha yang kefarduannya sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwa perintah pertama yang datang kepada Rasulullah SAW adalah bukan perintah ibadah, tetapi perintah yang pertama yang datang kepada Rasulullah SAW adalah perintah dakwah. Jadi berapa tahun Rasulullah SAW di Mekah, kemudian beliau buat dakwah, kemudian Allah SWT ketika beliau hijrah ke Madinah, barulah pada saat itu banyak sekali perintah-perintah ibadah yang datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah usaha dakwah, usaha atas iman, usaha untuk menyempurnakan iman, usaha untuk mendapatkan iman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha dakwah ini, iman akan datang dalam kehidupan kita. Ketika iman datang dalam kehidupan kita, maka kita hanya yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Beliau menjalankan kuasanya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan kekuasaannya ini baik dengan asbab ataupun tanpa asbab. Tanpa asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjalankan kekuasaannya. Kemudian dengan asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjalankan kekuasaannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk-makhluk mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kudrat Allah, tanpa bantuan Allah, tanpa kuasa Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kuasaannya tidak perlu kepada siapapun. दूसरी मेहनत जो सहाबा लेके आते थे, वो कहते थे कि आमाल हमारी तरह बना लो, एक अल्लाह पर यकीन, अपने दिल का यकीन एक अल्लाह के ज़ात पर रखो, सब के यकीन से, हर चीज़ के यकीन से दिल को खाली करो, एक अल्लाह के ज़ात से होने का यकीन अपने दिल का बनाओ। और दुनिया में जो जीने के तरीके हैं, लाइफ स्टाइल, उसमें कोई भी कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तरीके पे है। Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu usaha sahabat radhiyallahu anhum yang paling pertama adalah usaha dakwah. Kemudian dengan sebab usaha tersebut datanglah keimanan ke dalam kehidupan mereka. Kemudian usaha yang kedua para sahabat radhiyallahu anhum yaitu adalah bagaimana sahabat ini mengeluarkan keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan-keyakinan yang kotor dalam hati mereka, kemudian hanya memasukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum mereka berusaha untuk bagaimana supaya mendatangkan dari dalam hati mereka ini keyakinan yang baik, yaitu mereka tidak melihat lifestyle, tidak melihat gaya hidup orang lain, tidak melihat cara hidup orang lain, mereka hanya melihat cara hidup Rasulullah SAW. Karena dengan melihat cara hidup, dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW, itu akan memasukkan keimanan dalam kehidupan kita dan akan terkeluar keimanan-keimanan ataupun keyakinan-keyakinan yang rusak dari dalam hati kita. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये दावत जब होगा जिंदगी में तो हमारा नमाज भी मजबूत बनेगा, फिर नमाज बनेगा और फिर नमाज से जो वादे अल्लाह के वो पूरे होंगे। वरना आदमी नमाज पढ़ेगा आखिरत के लिए
और फिर दुनिया की असबाब की मेहनत में लगेगा दुनिया के लिए कि दुनिया का कमा लो, दुनिया का मसला है, दुनिया की जो जरूरत है वो चीजों से पूरी होगी और चीजें पैसे से आएगी, माल से आएगा और माल कमाने से आएगा। इसलिए आज तमाम दुनिया के मुसलमान 90% कमाने की मेहनत में लगे। कमाएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो चीजें आएंगी और चीजें आएंगी तो हमारा जरूरत पूरा होगा। Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ini sudah menjadikan usaha dakwah ini sebagai jalan ataupun maksud hidup kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melaksanakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau misalnya kita sudah menjadikan usaha dakwah ini sebagai maksud dan tujuan kita, maka dengan kita melaksanakan 2 rakaat salat ataupun terus hari Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita ataupun memperbaiki masalah dunia dan akhirat kita. Kalau kita tidak menjadikan usaha dakwah ini sebagai maksud hidup kita, maka hari Allah Subhanahu wa Ta'ala 5% kita salat, yaitu ketawajunya 5%, kemudian 95% itu berada di luar daripada sholat ataupun berada mencari masalah-masalah dengan dunia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita ini berusaha untuk memperbaiki akhirat kita dengan ibadah, kemudian memperbaiki dunia kita dengan usaha dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa? Kalau kita tidak menjadikan usaha dakwah sebagai jalan hidup kita, maka ibadah kita ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Kita akan berusaha, oh ini kalau misalnya saya ingin baik akhirat saya, maka saya dengan ibadah. Tapi kalau misalnya dunia saya ingin baik, maka saya harus usaha dunia. Maka Allah pemikiran seperti ini itu akan berlanjutan. Kenapa? Kalau saya usaha dunia, saya akan mendapatkan uang. Kalau saya usaha mendapatkan uang, maka apapun yang saya inginkan itu akan tercapai dengan uang. Maka pemikiran-pemikiran seperti ini yang terbagi-bagi, yaitu menyelesaikan masalah akhirat dengan agama, kemudian menyelesaikan masalah dunia dengan dunia, maka sampai kapanpun masalah kita tidak akan pernah selesai. मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का वादा दीन पर है। दीन हमारे जिंदगी में होगा तो अल्लाह हमारे दोनों जहां की जिंदगी को कामयाब करे। दुनिया की जिंदगी में राहत और सुकून और इज्जत अता फरमाएंगे। यह है दुनिया की कामयाबी। दुनिया की कामयाबी यह नहीं है कि किसी को बहुत माल मिल गया या मुल्क मिल गया। माल और मुल्क वालों को अल्लाह ने नाकाम किया है। माल मुल्क वाले कौन थे? कारून, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कौमियात, कौम समूद, कौम शुएब, ये सब माल मुल्क वाले थे। इनकी जिंदगी में दीन नहीं था तो अल्लाह ने इन सबको नाकामयाब बर्बाद किया। और जो लोग दीन वाले थे, तमाम नबी, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, जितने लोग दीनदार थे सबको अल्लाह ने कामयाब किया। इसलिए हम लोग सब मिलकर दावत की मेहनत में लगेंगे। दावत की मेहनत में लगेंगे तो हमारे दिल का यकीन बनेगा। दिल का यकीन बनेगा तो हमारे बदन से निकलने वाला अमाल बनेगा। ईमान यकीन बना, अल्लाह हमसे खुश होगा, अल्लाह हमसे राजी होगा, अल्लाह हमारे दुनिया और आखिरत दोनों जहां को बनाएंगे। इसलिए हम सब मिलकर दावत की मेहनत में लगेंगे इंशाअल्लाह। Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kita ketahui bahwa janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam agama. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kepada perkara yang lain. Kalau kita ingin mendapatkan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah agama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dunia, maka dengan agama. Ingin akhirat, maka dengan agama. Ingin bahagia, ingin senang, kemudian ingin mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan, kuncinya adalah dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita pelajaran. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu, mereka berusaha mencari kebahagiaan dengan dunia. Tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan kehancuran. Ada Firaun, ada Qarun, ada Namrud, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Nabi Shu'aib. Maka Allah SWT mereka adalah kaum-kaum ataupun orang-orang yang mencari kebahagiaan bukan dengan agama, sehingga mereka bukan mendapatkan kebahagiaan, mereka mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Tetapi Allah SWT kalau kita ini fokus terhadap agama, fokus kepada agama, menyelesaikan masalah dengan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita ini kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, kejayaan di dunia dan di akhirat.
Jadi Allah SWT kalau ada masalah di dalam kehidupan dunia kita, jangan kita usaha dunia, tapi kita fokus, kita perbaiki agama kita, maka Allah SWT akan perbaiki dunia kita. Maka Allah SWT lalu bagaimana cara mendatangkan agama ini? Maka beliau kembalikan lagi, yaitu dengan usaha dakwah. Dengan usaha dakwah, iman akan terbentuk, iman akan datang, iman akan terjaga. Kemudian apabila ada iman, maka agama akan masuk dalam kehidupan kita, agama akan wujud ataupun ada dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu inti daripada agama tadi adalah usaha atas agama. Inti dari iman tadi adalah usaha atas iman. Oleh karena itu bapak-bapak semuanya, hendaklah pasang niat kemudian mencatatkan namanya untuk buat usaha agama, untuk buat usaha atas iman. Bersedia semuanya Pak insyaallah. Boleh Pak catatkan namanya di belakang, terutama adalah Allah. Saya mau tes bagi orang-orang yang keluar 4 bulan. Masya Allah. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Berjalan. Kemudian ulama yang 1 tahun Pak, Masya Allah. Ulama yang 1 tahun, kita berdiri dulu Pak. Kita lihat yang sudah niat sungguh-sungguh 1 tahun pertama, kemudian 1 tahun yang kedua, kemudian 1 tahun ketiga Pak, Masya Allah. Mari Pak berdiri Pak, Masya Allah. Jangan malu-malu Pak, kalau kita berdiri angkat tangan, Allah yang akan turun tangan membalok hambanya Pak, Masya Allah. Mari tuan-tuan, Masya Allah. Bagi yang lamanya Pak, Masya Allah. Amin. Salam tuan-tuan, yang setahun pertama bagi ulamanya Pak, Masya Allah. Kita niat datang ke markas Pak, Masya Allah. Niat sungguh-sungguh belajar untuk mengamalkan agama. Kita akan silaturahim 200 negara lebih Pak sedang menunggu orang Indonesia Pak, Masya Allah. Maka harta yang terbesar Allah itu kepada seorang hambanya Pak adalah umur dan sehat Pak. Umur dan sehat, maka kita gunakan sebaik mungkin. Umur kita ini jangan seperti es Pak, Masya Allah. Mari tuan-tuan berdiri yang niat negeri jauh Pak, Masya Allah. Yang negeri jauh, Masya Allah. Berdiri Pak. Ada yang 4 bulan Pak, Masya Allah. 4 bulan negeri jauh, Masya Allah. Catatkan namanya Pak, niat dulu Pak, Masya Allah. Kita catatkan nama kita, kita daftarkan nama kita. Nanti sudah penuh catatannya Pak, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat. Maka ya Allah, hamba-Mu sudah penuh namanya 1 ribu ya Allah. Maka Allah berangkatkan kita nanti Pak, Masya Allah. Mari tuan-tuan, yang negeri jauh 4 bulan Pak, Masya Allah. 4 bulan negeri jauh. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala yang 4 bulan IPB Pak. Nama-nama catat nama saja. Mari Pak, Masya Allah. Tuliskan nama kita Pak. Insya Allah, nama Masya Allah. Catatkan saja namanya, Masya Allah, niat. Mari Pak, Masya Allah. Allah kabul, Allah asal. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Amin ya Allah. Masya Allah. Mari tuan-tuan, yang 4 bulan IPB, catatkan nama kita Pak. Kemudian 4 bulan JK jalan kaki dalam negeri Pak, Masya Allah. Sempurnanya Pak agama pada diri kita, walaupun kita sudah berulang kali negeri jauh EPB, namun kita belum pernah jalan kaki 4 bulan Pak. Ini belum lengkap kata masyarakat, Masya Allah. Mari teman-teman diusahakan 4 bulan jalan kaki dalam negeri Pak, Masya Allah. Takaza kita hari ini NTT sekian jamaah, NTB sekian jamaah, Masya Allah. Kemudian Jatim, maka kita siapkan waktu diri harta kita sambut takaza tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di malam Jumat yang hadirin, catatkan nama kita, ini agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam Sayyidul Ayam hadirin, Masya Allah. Maka nama kita akan digaungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman berdiri lagi, catatkan nama lagi Pak, Masya Allah. Masih ada waktu Pak, Masya Allah. Masih ada waktu, Masya Allah. Insya Allah Pak ya, kita pulang ke Makomi yang belum berangkat, kita hidupkan amalan Makomi, 5 amalan masjid, 5 amalan rumah Pak. Dengan asbab buat 5 amalan rumah, dengan amalan
masjid, insya Allah Allah berangkatkan kita negeri-negeri yang paling jauh nanti. Insya Allah sedia semua Pak. Subhanallah bihamdihi subhanallah